AP classes dedicated to excellence. Hello everyone. You must be aware that MPSC ATP vacancy was out in the year 2024. That is Maharashtra state के लिए assistant town planner vacancy के notification release हुआ था in the year 2024. Now in the year 2025 very recently another notification has come जिसमें ये कहा गया है that there is going to be a written examination on the 28th of June this year, that is 2025. So you must start with the preparation of this particular examination. अगर आपने इसका सिलेबस ध्यान से देखा है या आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर अच्छे से देखा होगा, यू मस्ट बी अवेयर दैट द टॉपिक ऑफ ASR is given there. Okay, now in this particular video let us cover this ASR topic briefly. First of all, what is the importance of this topic of ASR in MPSC examination? So you can expect around 2 to 3 questions and you can expect theory questions from this topic as well as numerical questions from this topic. It has been seen that at least one numerical question has been asked in every examination of MPSC ATP examination, especially from the bulk valuation part. So let us try to cover the theory part or the most important topics in the theory part as well as in the numerical part briefly in this video. Moving to first the most important parts or the most important topics of theory. So सबसे पहले ये ASR है क्या? ASR is nothing but annual statement of rates. Okay, now in Delhi it is usually called as circle rate, not only in Delhi but in the nearby areas as well, and in Mumbai or various other cities of Maharashtra it is called as ready reckoner rate. Okay, ऑनलाइन वेबसाइट पर आपको रेडी रेकनर रेट के PDF मिल जाएंगे. One will be focusing on Mumbai and the other one will be there for the rest of cities or the rest of the places in Maharashtra. Okay, so you can check the documents online. Next, the JDTP, that is the Joint Director of Town Planning of Maharashtra State, prepares ASR with the help of other officers and submit the same for approval to the Chief Controlling Revenue Authority or the CCRA. Okay, this process you have to understand, not only the process but you have to remember these dates as well. अब annual statement of rates, annual का क्या मतलब हुआ? Each year और per year, मतलब ये जो ASR document है, this ideally should be updated or replaced every year. ठीक है, तो अब जब ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो रहा है एंड इट्स गेटिंग सबमिटेड फॉर अप्रूवल, देयर शुड बी अ पर्टिकुलर डेट ऑन व्हिच दिस इज हैपनिंग एवरी ईयर. सो दैट डेट इज लास्ट डेट ऑफ February each year. You have to remember this. It is very important from your MPSC exam point of view. And one question was asked in the year 2022 from this area. Okay, so star mark, very important. Please make a note of it right away. Next, the Chief Controlling Revenue Authority by an order issues ASR every year on the first day of April. मतलब पहले तो JDTP Chief Controlling Revenue Authority में अप्रूवल के लिए भेज रहा है on the last day of February. इसके बाद क्या हो रहा है? The Chief Controlling Revenue Authority ASR issue कर रहा है on the first day of April. ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखनी चाहिए फॉर द एग्जाम. Okay, before we move on to the numerical part, I want to tell you that we at KP classes have come up with another batch wherein you will get recorded lecture series of MPSC. जो live classes हुई हैं उस सब के आपको recorded lectures मिलेंगे. Not only this, but you will also get study material, you will also get test series, you will also get subject wise tests. This will help you in complete preparation of MPSC ATP exam. So quickly enroll into this particular batch which is for only 5,999. This is going to boost your preparation a lot. Okay, moving on to the numerical part. अब जो रेडी रेकनर रेट डॉक्यूमेंट की हम बात कर रहे थे
which you can download free of cost from online resources. उसमें रूल नंबर 16 है. रूल नंबर 16 बात करता है वैल्यूएशन ऑफ बेयर लैंड की. ओके, सो बल्क वैल्यूएशन, बेयर लैंड यानी वेकेंट लैंड की वैल्यूएशन की बात हो रही है. दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, A, B एंड C. अब A को भी दो फर्दर क्लासिफिकेशन दैट इज क्लास 1 एंड क्लास 2 में डिवाइड किया गया है. What does class 1 talk about? What does class 2 talk about? And how to read this particular document first of all हम समझेंगे. Now if you check this document, this is in Marathi. Now it is compulsory for all the aspirants to know Marathi. So I guess it is going to be very easy for you to read this particular document. But still हम इसे एक बार English और हिंदी में समझ लेते हैं. So first of all, you have the classification based on area and then class 1 and class 2. अब एरिया क्लासिफिकेशन अप टू 500 टू 2000 ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको सिंप्लीफाई करके समझते हैं सबसे पहले. तो अप टू 500 स्क्वायर मीटर मतलब क्या? फॉर एग्जांपल 9000 मीटर स्क्वायर आपको दिया गया है, तो 9000 मीटर स्क्वायर में से फर्स्ट 500 यू हैव टू नोट डाउन. ओके, देन 500 to 2000 square meter you have to note down. This is amounting up to 1500 meter square. Okay, next 2001 to 4000 meter square मतलब this is amounting to 2000 meter square and then 4000 and above. ठीक है, ये एरिया दिया गया है स्क्वायर मीटर में फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड अबव में जैसे हमने एग्जांपल लिया है 9000 मीटर स्क्वायर का, सो 4000 एंड अबव इज गोइंग टू बी 5000 मीटर स्क्वायर. ये हमने एरिया क्लासिफिकेशन सिंप्लीफाई करके समझ लिया. नेक्स्ट क्लास 1 एंड क्लास 2. अब इसमें कहा गया है कि द वैल्यूएशन और द रेट दैट विल बी गिवन टू यू कैन बी ईदर इन टर्म्स ऑफ मीटर स्क्वायर और इन टर्म्स ऑफ हेक्टेयर. दोनों आपको दिए जा सकते हैं बिकॉज दिस इज बल्क वैल्यूएशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. नेक्स्ट क्लास 2 में भी आपको मीटर स्क्वायर या हेक्टेयर में रेट्स दिए जा सकते हैं. तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये एग्रीकल्चर जोन की ही बात हो रही है. द लैंड विल बी इन द एग्रीकल्चर जोन. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? फॉर क्लास 1 वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन प्रोबेबल एग्रीकल्चर लैंड and in the second one we are talking about agriculture land. ठीक है, ये हो गया एक डिफरेंस. दूसरा डिफरेंस है जब हम क्लास 1 के बारे में बात करेंगे तो रेट्स दिए जा सकते हैं मीटर स्क्वायर और हेक्टेयर दोनों में, बट व्हेन वी विल कैलकुलेट इट वी विल कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ मीटर स्क्वायर रेट और परसेंटेज ऑफ मीटर स्क्वायर रेट. मतलब क्या? जो यहां हमने फर्स्ट 500 मीटर स्क्वायर देखा था उसका 100% ऑफ द रेट लिया जाएगा. मतलब अगर वैल्यूएशन है उसकी 2000 रुपीज तो 100% ऑफ 2000 आप कंसिडर करेंगे फॉर द फर्स्ट 500. नेक्स्ट में 80% ऑफ 2000, नेक्स्ट में 60% ऑफ 2000 एंड 40% ऑफ 2000. अब ये 2000 जो है मीटर पर मीटर स्क्वायर रेट है, दैट ओनली यू आर गोइंग टू कंसिडर इन क्लास 1. But in class 2, for the first two you have to consider per meter square rate and for the second two you have to consider per hectare rate. So for the first 500 you have to consider 100% of the square meter rate and for the second 1500 meter square you have to consider 80% of the square meter rate and rest you have to consider per hectare rate for the 2000 to 4000 meter square and for above 4000 meter square. Okay, next B किस बारे में बात कर रहा है? Except agriculture land, for example residential area, commercial area, industrial area. इसमें आप bare land या bulk land valuation कैसे करेंगे? ठीक है, so area wise division. अब this will be easier for you to understand since we have already talked about a similar categorization of area in option number A or category number A. So up to first 500 meter square, 500 to 2000, 2000 to 4000, 4000 to 10,000, 10,000 and above. You will calculate the rates for these areas separately and you will sum it up to get your final land valuation. Okay. It is only talking about one category, that is residential, commercial, industrial. मतलब agriculture को छोड़ के कुछ भी. तो class 1, class 2 या और further it is not divided. ठीक है. First case में you have to take 100% of the valuation. जैसे last
केस में हमने देखा था 2000 इज द रेट, फॉर एग्जाम्पल मीटर स्क्वायर रेट. ओके, सो यू विल कंसिडर 100% ऑफ 2000. For the next one, you consider 90% of 2000, 80%, 70%, 60%, and so on. आप इसे अलग अलग कैलकुलेट करके you have to sum it up to get the final answer as already discussed. Next, ऑप्शन सी में क्या बात कही जा रही है? अगर in case of layout, तो you already know what a layout is. ठीक है, let's say this is the land parcel. इसमें we are talking about road and we are talking about some plots, for example. तो ये हो गया लेआउट. अब इन केस ऑफ अ लेआउट हाउ विल द वैल्यूएशन बी डन? 90% मस्ट बी कंसिडर्ड. ठीक है, अब इसे और अच्छे से समझने के लिए लेट्स टेक वन एग्जांपल. दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एमपीएससी एटीपी 2022. लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. A bulk land having an area 2000 meter square is situated in Pune. तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट आप रेफर करेंगे that has to be for rest of the Maharashtra and not of Mumbai. Area has been given to you, that is 2000 meter square. In a residential zone, मतलब rule number 16B you have to apply. Next, in the development plan, if the rate of the land in the ASR is given as 1000 per meter square, then what would be the valuation of the property? अब जब आपको ASR के बारे में नहीं पता था, you would have gone ahead with 20 lakh option. कैसे? 2000 multiplied by 1000 simply gives you 20,000. अगर आपको ASR की थोड़ी नॉलेज होती तो आप कहते कि नहीं 100% ऑफ वैल्यूएशन तो शायद हर बार नहीं लिया जाता है, मे बी 90-95% ऑफ वैल्यूएशन लिया जा सकता था. अगेन in that case none of the option would be correct. ठीक है, now that you have a better understanding of ASR, of the ready reckoner rate, how it is followed for agriculture land, for non agriculture land, you already know that you have to follow rule number 16B. ठीक है, अब इसको solve करके let us find out क्या इसका आंसर हो सकता है. So for the first 500 meter square you have to take 100% of the valuation. For the next 1500, that is from 501 to 2000 meter square, you have to take 90% of the rate. Okay, now let us solve for this. 500 multiplied by 100% of the rate, that is 100% of 1000. Next, 1500 multiplied by 90% of 1000. ठीक है, if you solve for this you get this answer as 5 lakh and this answer as 13,50,000. This is not the end, as we have discussed. You have to find out the sum of both these values to get the final one. So this is 18,50,000. The correct answer is 18,50,000, option number 3. As per the official answer key also, this is 18,50,000 is the correct answer. Okay, now for better preparation, for in-depth understanding of ASR, for in-depth understanding of valuation, not only this but for a complete preparation of MPSC ATP examination, please enroll into our MPSC lecture as already discussed. For more details on MPSC or on other competitive exams of architecture and planning, please subscribe to our YouTube channel. Thank you. KP classes dedicated to excellence.